हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात है लास्ट ईयर की, जब मैंने सोचा कि क्यों ना गेमिंग पीसी बनाया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की और अपने दोस्तों को बोला कि हेल्प मी आउट विद स्टफ, और उन्होंने मुझे सारे कॉन्फ्रेंस में हेल्प आउट किया। और इसके बाद फिर मैंने रिसर्च करी कि कहाँ सबसे सूटेबल रेट्स मिलेंगे, और फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल करी और हमने निकल पड़े अपने गेमिंग पीसी बनाने। मैंने सोचा था कि मैं उसको खुद असेंबल करूँगा। इसकी दो वजूहत थी। पहली कि मैं चाहता था कि मैं उसकी वीडियो शूट कर सकूँ, और दूसरी ये थी कि पाकिस्तान में इन कंपोनेंट्स को रीफर पे ही बेचा जाता, तो इसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से मैं चाहता था कि मैं अपना पीसी खुद असेंबल करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले what we have here is B450 Tomahawk motherboard, which can support up to 3rd generation AMD Ryzen processors. Having DVI-D port, USB 3.1 generation, Type A and Type C both. फिर इसमें हमें मिल जाता है HD audio connectors, heavy plated gaming heat sinks, DDR4 boost PCIe steel armor, Turbo M2, audio boost and extended heatsink design with Arsenal sticker area. उसके बाद what we have here is MSI Gaming X GeForce GTX 1660 NVIDIA graphic card, which has a boost clock of 1860 MHz, 6GB GDDR5. इसमें हमें 3 डिस्प्ले बोर्ड मिलते हैं और एक HDMI पोर्ट which supports 4K at 60 Hz. It has a dispersion fan blade which are steep curved, which helps in accelerating the airflow. It has a zero fuzzer technology जो कि यूज होती है in low load situations, keeping a noise free environment. फिर आते हैं प्रोसेसर पे, जो कि है AMD Ryzen5 2600. इसमें we have 6 CPU cores and 12 threads, having a base clock of 3.4 GHz and up to 3.9 GHz. Then we have a Thermaltake Smart RGB power supply of 600 watts. After that we have here is Adata Gammix D30 DDR4. और फिर आते हैं SSD पर, जो कि है Gammix S5. और ये है बड़ी गंदी क्वालिटी का वाईफाई अडेप्टर, जो कि आज तक नहीं चला. एंड हियर वी हैव इज कूलर मास्टर MB511 केसिंग.
चलो लेट्स स्टार्ट द असेंबलिंग। सबसे पहले सारे नट्स खोल कर केस हटाओ और पोर्ट की केसिंग लगाओ। Now place the processor in the motherboard. And then place the fan over it. Make sure to tighten them well. Now remove the screws from the inside of the case so that you can place the motherboard in it. मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया। Now take out the hard drive holder और उसमें हार्ड डिस्क लगा के वापस लगा दो, जो कि है 1 TB barracuda। फिर बारी आती है पावर सप्लाई की। और फिर बड़े प्यार से Ryzen SSD इंस्टॉल करके my PC was ready to use. My PC assembling is not an easy task. I would recommend कि अपने सामने खड़े होकर असेंबल करवा सकते हो तो करवाओ, या जैसे भी करके असेंबल करवा लो, क्योंकि बहुत लंबी होती है और हम थक गए थे। खैर, special thanks to Hassan for helping me out in assembling it, and Ahad for helping me out in shortlisting the components. Thanks for watching.